Assalamu alaikum. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department, Abyssinia Medical College. Do you have any questions from the last lecture? Jay, do you have any questions from the last lecture? Can you everyone hear me and watch the slides as well? Sure. Can everyone hear me properly and watch the slides as well? Alrighty, I'm gonna start the lecture. The topic we started was the biochemistry of endocrine system. Uh, in this topic, we have covered these topics so far under the heading of overview of endocrine system. इसमें हमने कर लिए थे chemical regulating systems, functions of hormones, measurement of hormones, properties of receptors, cell surface receptors, cell signaling and target cells, classification of hormones का रहे थे. इसमें हमारे पास peptide hormones हैं, steroid hormones हैं और amine hormones. टू मेन क्लासेस हैं, ये पहले किया है तो इसमें थोड़ा सा स्पीड से जाऊंगा. Two main classes हैं हमारे पास on the basis of structure and site of activity in the cells. Steroid hormones and non-steroid hormones. The non-steroid hormones में हमारे पास peptide hormones और amine hormones. Hormones divided into steroid hormones and non-steroid hormones. Non-steroid hormones are peptide hormones. The hormones having the structure of peptide. Second है हमारे पास amino acid derivatives, जिन्हें हम amine hormones भी कहते हैं. And miscellaneous ones, prostaglandins and cytokines. Steroid hormones में हमारे पास आ जाते हैं adrenocortical hormones and sex hormones. Sex hormones can be female sex hormones and male sex hormones. इन पर differences देखें. Steroid hormones जो होते हैं वो होते हैं lipophilic. Some substance is lipophilic, that substance is hydrophobic.
hydrophobic, would not like water. The non-steroid hormones are hydrophilic. If some substance is a lipophilic substance, lipid loving, it would be hydrophobic and it would require a transport protein, क्योंकि प्लाज्मा में मूव करने के लिए फिर उसे प्रोटीन चाहिए होगी जिसके साथ वो अटैच होकर मूव कर सके, अदरवाइज मूव नहीं कर सकते, because plasma is contains water. So the non-steroid hormones, they don't need a transport protein. Plasma half-life of the steroid hormones is usually long as compared to the plasma half-life of non-steroid hormones. जो receptors होते हैं इन steroid hormones के, वो usually intracellular होते हैं. Intracellular के अंदर भी दो किस्म के होते हैं, ये cytoplasmic और nuclear. लेकिन जो non-steroid हार्मोन के receptors होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं receptors. Mediators of the steroid hormones are receptor hormone complex, whereas the mediators in the non-steroid hormones are second messenger systems like cyclic AMP, cyclic TMP, calcium and phosphatidyl inositol. Now we come to the topic of peptide hormone synthesis, packaging and release. ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है, ठीक है. इसमें आप पहले ओरिएंटेशन ले लेंगे. हमारे पास ये वाला जो पोर्शन, this is the plasma, this is the extracellular fluid portion, and this here is cytoplasm. ठीक है. उसके अंदर हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली एक दिखाई हुई है. ये हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसलेशन हो रही है इस पर, ठीक है. ट्रांसलेशन होती है तो ये हमारे पास एक प्री प्रो हार्मोन बन जाता है. ठीक है जी. ये जो प्री प्रो हार्मोन है, ये बनता है स्क्रीट होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है. So the messenger RNA on the ribosome binds amino acids into a peptide chain called a pre-prohormone. The chain is directed into the endoplasmic reticulum by a signal sequence of amino acids. ठीक हो गई. नेक्स्ट क्या होता है, ईआर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स इस प्री प्रो हार्मोन को चॉप करते हैं, कट करते हैं इनटू प्रो हार्मोन, और ये सिग्नल सीक्वेंस अलग हो जाता है. This pro hormone is still inactive.
In the next phase, this prohormone passes from the endoplasmic reticulum to the Golgi complex via a transport vehicle. ठीक है, via transport vesicle. ये बर्ड ऑफ होता है यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है ना, and incorporates into the Golgi apparatus. It is still in the form of the prohormone. अब ये पूरे गोल्जी apparatus सिस्टम में से पास ऑन होता है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से पास ऑन होता है एंड नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सक्रीटरी वेजिकल में स्क्रीट हो जाता है फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम द गोल्जी apparatus. जब ये सिक्रीट होता है ना सिक्रीटरी वेजिकल में, तो इसके अंदर हम एक साथ में एंजाइम होता है जो इसको चॉप ऑफ करता है, मजीद चॉप ऑफ करता है इनटू एक्टिव हार्मोन एंड अ पेप्टाइड फ्रेगमेंट. पेप्टाइड फ्रेगमेंट वो फ्रेगमेंट होता है जो एक्टिव हार्मोन के अलावा पड़ा होता है, जो एक्टिव हार्मोन के अलावा पेप्टाइड चेन होती है. सो स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रांसलेशन मशीनरी, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्री प्रो हार्मोन बना था, then enzymes chopped it off into prohormone and signal sequence. The prohormone got secreted as a transport vesicle into the Golgi complex, past the Golgi complex, and then secreted into a secretory vesicle along with an enzyme that will chop off it into active hormone and a peptide fragment. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो secretory vesicle है ना, ये रिलीज कर देगा इस एक्टिव हार्मोन को into the extracellular fluid. Once it is secreted into the extracellular fluid, this hormone can get itself from the extracellular fluid into the plasma. And once this active hormone gets into the plasma, it would go to the target cell. Pre-prohormone, prohormone, transport vesicle, Golgi complex, secretory vesicle, active hormone released into the extracellular fluid, gets into the plasma, goes to the target cell, and performs the function it was supposed to do. This is the whole story of a peptide hormone synthesis, packaging, and release. Alright, if you have any questions, you may ask regarding this phenomenon. Important point है, university question है, ये 6 main points है इसके, जो आपने narrate करने हैं, जो आपने बताने हैं. In the even this question was asked. Do you have any questions? Next is my first steroid hormones.
स्टीरॉयड हार्मोन्स का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. स्टीरॉयड हार्मोन्स और मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरॉन बनती है. प्रोजेस्टेरॉन से एंड्रोस्टेरोन बनती है. उससे टेस्टोस्टेरोन बनती है. ठीक है. ये सिंथेसिस आप लिपिड्स में देख चुके हैं. यहाँ पे दोबारा देख. प्रोजेस्टेरॉन से आगे हमारे पास बनती है कॉर्टिकोस्टेरोन, और कॉर्टिकोस्टेरोन से आगे एल्डोस्टेरोन इन दी एड्रिनल कॉर्टेक्स. साथ में कॉर्टिसोल भी बनते हैं. एंड्रोस्टेरोन से हमारे पास बनते हैं एस्ट्रोन, से बनती है एस्ट्राडायोल. टेस्टोस्टेरोन से भी हमारे पास बनती है एस्ट्राडायोल इन दी ओवल्स. ठीक हो गया. The important thing to understand here is cholesterol is the main precursor molecule that will lead to the formation of testosterone, estradiol, cortisol, corticosterone, aldosterone, etc. इन सब का स्ट्रक्चर भी ना इस वजह से, अगर आप देखें, इन सब का स्ट्रक्चर भी कोलेस्ट्रॉल की तरह का ही है. ठीक है. ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल के रिंग्स होते हैं, 3 हेक्सागॉन्स और एक पेंटागन. ठीक है. 3 हेक्सागॉन्स और एक पेंटागन. उसके ऊपर ही चेंजिंग्स हुई होती हैं, फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हुए होते हैं. अदरवाइज मेन स्ट्रक्चर इज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. स्टीरॉयड हार्मोन्स का एक्शन देख लें. कंप्लीट ओवरव्यू इसको जरा ब्रेकअप करके देख लेते हैं. आप लोगों को भी डिफरेंसेस का टेबल बताया था, मैंने बताया था. उसके अंदर भी ये बताया था कि ये जो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दे वुड रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन because they are lipophilic. Being lipophilic, they will be hydrophobic, and any hydrophobic compound would require a transport protein if it needs to move in the plasma, blood. Okay. The most hydrophobic steroids are bound to plasma protein carriers. Only unbound hormones can diffuse into the target cells. So they have a protein carrier, these steroid hormones. Once it gets near the plasma membrane, the transport protein breaks off and the steroid hormone moves into the cell via cell membrane. It's easy for these steroid hormones to move via cell membrane because they are lipophilic and the plasma membrane is a lipid bilayer, so it moves into the plasma membrane. ये आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो
इंट्रासेलुलर होते हैं, और इंट्रासेलुलर में भी दो, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। यहाँ शो हो रहा है, ये देखिए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होंगे इनके यहाँ, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, these are the receptors. It may go and bind itself to the cytoplasmic receptor or the nuclear receptor. इनको collectively कहते हैं intracellular receptors. They may also have cell surface receptors sometimes, not all of the times, but sometimes. यहाँ पे ये पॉइंट जरूर देखिए कि जिस भी हार्मोन के सेक्टर मेम्ब्रेनस होंगे, सेल सरफेस पे, उनका जो रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी अ रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, जिनके भी सेल सरफेस रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक होंगे या न्यूक्लियर होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे, इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा स्लो रिस्पॉन्स। क्यों होगा इनका स्लो रिस्पॉन्स? क्योंकि ये अगर साइटोप्लाज्मिक है तो ये न्यूक्लियस में जाएंगे पहले ये रिसेप्टर, और हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूक्लियस में जाएगा। अगर न्यूक्लियर है तो वहां इसमें है ही ऑलरेडी, ये जाके वहां पे डीएनए पे एक्ट करेंगे, उससे बनवाएंगे आरएनए, वो फिर आरएनए मूव आउट करेगा साइटोप्लाज्म में, उससे बनेगी प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन फिर जाके एक्ट करेगी। कैसे? वो प्रोटीन फिर जाएगी सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी एपरेटस में, गोल्गी एपरेटस से वो जाएगी इधर स्प्रे को ब्लड में, ब्लड से जाके फिर वो अपने टारगेट के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वो स्लो रिस्पॉन्स है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट मेम्ब्रेनस रिसेप्टर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेल सरफेस के ऊपर है, तो वो डायरेक्ट रैपिड रिस्पॉन्स बने। जी, इसको कंटिन्यू करेंगे जो इनके साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं। The receptor hormone complex binds to DNA and activates or represses one or more genes. जैसे अभी आपको बताया था कि अगर ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, in that case it would go into the nucleus, और अगर वैसे ही न्यूक्लियर रिसेप्टर है तो इसका जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियस में। ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये जाके डीएनए पे अटैच होगा और उसको एक्टिवेट करवाएगा। ठीक है, a portion of the DNA will be activated and it will be and the process of transcription would be initiated। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगी और हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा। दैट मैसेंजर आरएनए वुड मूव इनटू द साइटोप्लाज्म and the process of translation would be ensured, releasing a new protein। ठीक है, so this is the action of the steroid hormone। ठीक है, कि ट्रांसफर प्रोटीन के वाया ब्लड में मूव किया वो हार्मोन, सेल मेम्ब्रेन में आया, तो क्रॉस किया, अपने रिसेप्टर्स को पकड़ा, रिसेप्टर्स को पकड़ के डीएनए के ऊपर एक्ट किया, ट्रांसक्रिप्शन करवाई, ट्रांसलेशन करवाई और अपनी एक प्रोटीन बनवा दी। This being the slow response।
Raj, do you have any questions up till now? आप लोगों ने अब तक स्टीरॉयड हार्मोन के देख लिए एक्शन आप लोगों ने टाइड हार्मोन्स के देख लिए synthesis packaging and action. Do you have any questions up till now? Any questions? Gee, do you have any questions? You may answer in the chat head. Simple yes or no question so that I may move forward. क्या हुआ सब सो गए क्या जागो जागो सवेरा हुआ Do you have any questions? देखना again the same feeling कि आप लोगों ने मोबाइल साइड पे रखे हैं अब तक मैं आप लोगों के पेप्टाइड हार्मोन्स steroid hormones. Now it's turn of the amine hormones. Amine hormones are amino acid derivatives. ये आपके सामने टायरोसिन अमीनो एसिड मौजूद है. It is the parent amino acid for catecholamines and thyroid hormones. ठीक है, यहाँ पे शो भी हो रहे हैं catecholamines and thyroid hormones. Catecholamines are made by modifying the side group of the tyrosine. Catecholamines हैं कौन कौन से? Dopamine, non-epinephrine और epinephrine. जबकि ये thyroid hormones हैं, these are synthesized from tyrosine and iodine atoms. Two tyrosines and iodine atoms. ये देखें एक tyrosine दूसरा tyrosine और उनके ऊपर iodine लगे हैं. ठीक है, ये होते हैं हमारे पास थायरॉक्सिन जिसमें टेट्राइडोथायरोन थायरोनिन होता है और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 एंड T4. ये हमारे पास टायरोसिन की एग्जांपल्स. हमारे पास एक और अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान that may also be involved in the synthesis of amino acid derivative hormones और amine hormones. लेकिन हमारे पास यहाँ पे और हम यूजुअली देखेंगे बॉडी में वो कैटेकोलामीन्स और थायराइड हार्मोन्स ये जो टायरोसिन से बनते हैं.
ठीक है, मगर पता होना चाहिए आपको कि दो हार्मोन्स है, एक टायरोसिन है, दूसरा ट्रिप्टोफान है। ठीक है, हम टायरोसिन वालों को ही देखेंगे। ये टेबल मैंने आपको पहले दिखाया था, जो ब्लू कलर में था, जिसमें स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स को डिवाइड किया गया। एक टेबल ये है जिसमें हमने यहाँ पे दिखाया जा रहा है पेप्टाइड हार्मोन्स में, स्टेरॉयड हार्मोन्स में, माइल हार्मोन्स में डिफरेंसेस, और माइल हार्मोन्स में भी कैटिकोलामीन्स, और जो हमारे पास थायराइड हार्मोन्स हैं इनमें डिफरेंसेस। अच्छा टेबल है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। द सिंथेसिस एंड स्टोरेज, इसमें डिफरेंसेस। पेप्टाइड हार्मोन are made in advance and stored in secretory vesicles। ये आपने देखा था अभी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी apparatus और उसके बाद secretory vesicles, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव हार्मोन में ब्रेक डाउन होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्री प्रो हार्मोन गोल्गी apparatus में आते आते प्रो हार्मोन, और उसके बाद एक्टिव हार्मोन बनता है वो secretory वेसिकल में बनता है, उसके बाद वो रिलीज होता है into extracellular fluid and then into the plasma। ठीक है, the steroid hormones they are synthesized on demand from precursors। precursors क्या हैं ये इसके steroid hormones के? कोलेस्टेरॉल। इसी तरह जो अमाइन हार्मोन्स है हमारे पास, उनमें जो ये कैटिकोलामीन्स हैं दे आर मेड इन एडवांस एंड स्टोर इन सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब आपको ना ये पेप्टाइड हार्मोन्स और ये जो कैटिकोलामीन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये सेम आ रहे हैं, जबकि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स है, ये तकरीबन सेम आएंगे। मेड इन एडवांस इन प्रिकर्सर स्टोर इन द secretory vesicles। ठीक है, ये भी आपको पेप्टाइड हार्मोन की तरह ही नजर आया। ये ना काफी सारी चीजें आप लोगों को मिक्स एंड मैच नजर आएंगी यहाँ पे, तो साथ साथ देखते जाइए, क्योंकि ये जो अमाइन हार्मोन्स है ना, इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज नजर आती हैं हमारे पास, पेप्टाइड हार्मोन्स की भी और स्टीरॉयड हार्मोन्स की भी। अब देखेंगे साथ साथ, you'll get to know। जी, released from the parent cell, peptide hormones by the form of exocytosis, steroid hormone by simple diffusion, catecholamine by the process of exocytosis, and thyroid hormones by the transport proteins। How are different hormones transported in blood? The peptide hormones are dissolved in the plasma and transported into the blood, but the steroid hormones are bound by a carrier protein. Catecholamines are dissolved in plasma, whereas the thyroid hormones are bound to the carrier proteins। आप ये देख सकते हैं, ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं और ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं। dissolved in plasma, bound to carrier protein, bound to carrier protein। The plasma half-life of the peptide hormones are short, as well as catecholamines have short half-life, whereas steroid hormones have long half-life and thyroid hormones have long half-life as well. Now we come to the location of the receptors. Peptide hormone have cell membrane receptors, as well as catecholamines also have cell membrane receptors. The receptors of the steroid hormones are either cytoplasmic or nuclear.
Some of them may have membrane receptor, but most of them are cytoplasmic and nuclear. The thyroid hormones also have nuclear receptors, somewhat like the steroid hormones. As far as the response to the receptor ligand binding goes, peptide hormones activate second messenger systems क्योंकि ये मेम्ब्रेनस होते हैं इनके रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर में आप लोगों ने देखा हुआ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जितना होते हैं। जो रिसेप्टर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, लाइगेंड वहां पे आके बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू जाता है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम पाथवे जिस तरह IP3 डैग पाथवे, इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट डाइसैलिसिस्टोल पाथवे, उसके थ्रू जाता है। ठीक है। और स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करें हम तो हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ जीन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में है नॉन जीनोमिक एक्शंस। इसको छोड़ें, पहले पॉइंट को देखें। एक्टिवेशन ऑफ जीन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं? उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर। मेम्ब्रेन रिसेप्टर कम होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स के। जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जब लिगैंड बाइंड करता है, ठीक है, तो आइदर देखिए साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स फिनोमेना, जब रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है जाके डीएनए के ऊपर एक्ट करता है, डीएनए के पोर्शन को एक्टिवेट करवाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। उसके बाद जो आरएनए बनेगा हम साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन। जी, कैटेकोलामीन्स को देखें हम तो एक्टिवेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर सिस्टम जस्ट लाइक दी पेप्टाइड हार्मोन्स। और थायराइड हार्मोन्स को देखें तो एक्टिवेशन ऑफ जीन्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जस्ट लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कई चीजें मिक्स एंड मैच हो रही हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और कैटेकोलामीन्स हैं, इनके काफी फीचर्स मिलते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स के काफी ज्यादा फीचर मिलते हैं। है जी। टारगेट रिस्पॉन्स, जनरल टारगेट रिस्पॉन्स पेप्टाइड हार्मोन्स में मॉडिफिकेशन ऑफ existing proteins and induction of new proteins synthesis. Steroid hormone में induction of new protein synthesis. Catecholamines में modification of existing proteins just like the peptide hormones. और thyroid hormone में induction of new protein synthesis just like the steroid hormones. और जी एग्जाम्पल्स देखिए प्लीज। पेप्टाइड हार्मोन में हमारे पास एग्जांपल आती है इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। कैटेकोलामीन्स में हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामिन। वेरस थायराइड हार्मोन्स में थायरॉक्सिन, T3 और T4 और T3 भी आती है। This is an overview, a crux of all of the functions, transport, half-life, receptor binding, target response of the hormones. Hormones being peptide hormones or steroid hormones or amine hormones. इसकी मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें अगर लेना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए ताकि अगले पोर्शन के ऊपर चला जाए।
और जी endocrine reflex pathway. Stimulus आया via afferent signals, सिग्नल की इंटीग्रेशन हुई CNS और वहां से efferent signals जनरेट हुए towards the target cells or ultimately physiological action on which may lead up to negative feedback as well. इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है. आपने खाना खाया, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ. आपने खाना खाया, जैसे जैसे आप खाना खाते जाएंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं वो एक्टिवेट होते जाएंगे. उन रिसेप्टर्स से एफरेंट न्यूरॉन्स जाएंगे CNS की तरफ. वहां पे इंटीग्रेशन होगी. Integration of these signals carried by the afferent neurons. Once they're integrated in the CNS, they would generate signal and transmit it through efferent neurons. And ultimately, those signals will be taken to the pancreas along with the high blood glucose signals, and they would compel the pancreas to release insulin. That insulin, being a peptide hormone, will be taken up in the plasma and transported to the target tissues. Target tissues पे तो क्या काम करती है insulin? It will increase the glucose uptake and utilization and decrease the blood glucose level. This whole phenomena is called endocrine reflex pathway. Repeat कर रहा हूँ. Endocrine reflex pathway में हमारे पास सबसे पहले stimulus आता है. Stimulus हमारे पास जिस तरह एग्जाम्पल में आपको शो करवाया गया हुआ है. Eating a meal, that may be a stimulus. Stimulus जब जनरेट हो जाता है बॉडी में तो afferent signals के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है towards the CNS. Once the information gets into the CNS, it will be integrated and the response signal will be transmitted via efferent pathway, efferent neurons, and that would result into the physiological action. Example आपके सामने थी. When you eat a meal, the stretch receptors in the digestive tract send a signal via afferent neurons to the CNS. Those signals will be integrated into the CNS and signals are sent towards the target tissue, the pancreas, via efferent neurons. And those signals will compel the pancreas to release insulin. Once the insulin is released, being a peptide hormone in the nature, it will be transported via blood without any transport protein. And when the insulin gets to the target tissue, target cells,
It would increase the glucose uptake and utilization, which will ultimately decrease the blood glucose level. All right, G. Done. Overview of the endocrine system is done. If you have any questions, you may ask. आप लोगों के सामने ये आपका UHS course curriculum of the first topic, an overview of endocrine system आपके सामने है. किसी किस्म की कुछ चीज रहेगी तो मुझे बता दें. Classification of hormones based on their mechanism of action and chemical nature, mechanism of action of each class of hormone, general characteristics of various types of hormone receptors, types and actions of various kinds of G protein mediating the action of hormones, signal transduction pathway of various hormones, types and role of various kinds of second messenger. काइंडली एक चीज रह गई है, आप लोगों को लगता है कि ये नहीं हुआ अब तक फिनोमेना, तो बता दें. मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं. If you have any questions, you may ask. I'm going to give you a minute or two to read the topics, understand them, and then I'll start further ahead. Do you have any questions, please? All right. So this topic is done. We are moving on. The next topic is pituitary and hypothalamic hormones. आगे हमारे पास आएंगे thyroid hormones, calcium regulating hormones, adrenal cortical hormones, adrenal medullary hormones, male and female gonadal hormones, or hormones of pancreas. But now we're going to study pituitary and hypothalamic hormones. UHS course curriculum of pituitary and hypothalamic hormones. Structure, biosynthesis, secretion, transport, regulation, catabolism, and biological action of all hypothalamic and pituitary hormones. ठीक है, ये portion आ जाएगा. Disorders associated with hyper and hypofunction of these hormones. सबका नहीं कहा हुआ इन्होंने, कुछ का कहा हुआ, such as growth hormone deficiency, dwarfism, gigantism, and acromegaly.
ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, ये दूसरे हमारे पास कॉर्टिसोल के। उसके बाद आए थे हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस और इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एडीएच। सो ये कुछ हमने सबसे पहले तो ये सारी चीजें देख के इसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिक्रीशन वगैरह आ जाती। डिसऑर्डर्स की तरफ आना है, हाइपर और हाइपो फंक्शंस के, ठीक है, ऑफ सम ऑफ द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी एंड सम ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की आ जाएंगे ये ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली, तीन ये। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम आ जाएगा, एडिसन्स डिजीज आ जाएगा, दो ये। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस आ जाएगी और ऐसा ही एडीएच आ जाएगी, दो ये। तो ये टोटल 7 डिजीजेज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, और कुछ इसका ये जर्नल फिनोमेना आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वुड बी दी पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स पोर्शन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमारे पास, hypothalamus synthesizes and secretes neurohormones called releasing hormones or hypothalamic hormones that in turn stimulate or inhibit the secretion of the pituitary hormones. जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ ऐसे हार्मोन्स को secrete करता है जिनको हम रिलीजिंग हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं, और वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, स्टिमुलेट और इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं ये रिलीजिंग हार्मोन्स या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के नाम से होते हैं, ठीक है। इनका मेन इफेक्ट क्या है, रिलीज और इनहिबिट पिट्यूटरी हार्मोन्स। अगर हम देखें तो टारगेट्स इनका टारगेट इनके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को देखें तो उनमें आ जाती है हमारे पास प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखने के साथ ही तो ऑक्साइटोसिन और वेसोप्रेसिन, इनमें से हर एक का अपना अपना एक्शन है। इंशाल्लाह जैसे जैसे इन पे जाते रहेंगे इन पिट्यूटरी हार्मोन्स पे, तब देखते रहेंगे साथ साथ। हाइपोथैलेमस functions as a master coordinator of hormonal action, क्योंकि ये इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है और वो आगे जाके डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। इसकी वजह से इसको मास्टर कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ वो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। इसके जो इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज जो इनहिबिटेड है वो है रिलीज होता है ये थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाता है, जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नाम है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाता है। नेक्स्ट जो हाइपोथैलेमस से निकलता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज करवाता है जाके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस का नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तो निकलवाता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, बीटा लाइपोट्रोपिन और बीटा एंडोर्फिन। हाइपोथैलेमस का और हार्मोन है रिलीजिंग, जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन,
और जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो वहां से रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन। हाइपोथैलेमस का एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर as well as prolactin release inhibitory factor. Prolactin releasing factor PRF and the other phenomena, the PIF prolactin release inhibitory factor would inhibit the release of prolactin. ठीक हो गया जी? I'm gonna stop here. If you have any questions, you may ask. I have only a couple of minutes left. In fact, 1 minute left only. So I'm not gonna go any further into the lecture. G. If you have any questions, you may ask. If you have any feedback you would like to give, you may. समझ आ रही है कि कोई समझ नहीं आ रही? जी बेटा, कुछ समझ आ रही है कि कुछ नहीं? थैंक यू बेटा, अच्छी बात है, समझ आ रही है। थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक हो गया बेटा। चलें जी, it's 12 o'clock. Time for my lecture is over. This is Dr. Harun Habib signing off. Allah Hafiz.